Wildlife diversity. There is a large diversity in climate and physiography in India. Due to this geographical diversity, a large variation is seen among the insects, birds, animals, and vegetation. So, friend, climate and physiography is different in our country, and due to these geographical diversities, we can see variations among the insects, birds, animals, and vegetation. There are about 15 lakh species of animals, birds in the world. Out of these, 81,251 species are found in India. यानी कि वर्ल्ड में 15 लाख जितनी एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीसीज हैं और उसमें से 81,251 स्पीसीज जो है तो वो इंडिया में मिलती है. इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म्स है तो उसमें इंडिया का जो रैंक है तो 12th नंबर का रैंक है. Animals from Asia, Europe and Africa are seen in India. So we can see different animals of Asia, Europe and Africa in our country. यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो एनिमल्स हैं तो वो हमारे इंडिया में भी देखे जा सकते हैं. अफ्रीकन चरक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड कॉट्स एंड काश्मीरी डियर, elephants and gibbons from Southeast Asia etc. are found here. यानी कि ये जो एनिमल्स है तो वो एनिमल्स हमारी कंट्री में भी मिलते हैं. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पिकॉक, गोराड मीन्स बस्टर्ड, हॉक, किंगफिशर, फ्लैमिंगो एट्सेट्रा. और इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटीज़ है तो वो बायोडाइवर्सिटीज़ में कौन कौन से एनिमल्स देखे जा सकते हैं तो यहाँ पे उनके नेम दिए हैं. ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर और डिफरेंट टाइप्स के जो स्नेक्स है, पिकॉक है, घोराड़ है. तो ये जो सब एनिमल्स से बर्ड्स है तो वो हमारी कंट्री में देखे जा सकते हैं. द स्नो लेपर्ड इन हिमालयस and the red panda found at the same altitude are distinguished animals here. यानी कि जो स्नो लेपर्ड है तो वो हिमालयस में देखे जा सकते हैं और रेड पांडा जो है तो वो भी कुछ ऑल्टीट्यूड के ऊपर यानी कि कुछ ऊंचाई के ऊपर वो देखे जा सकते हैं. Currently India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abodes. यानी कि हाल में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में कि जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों एक ही कंट्री में नेचुरल अबॉर्ड्स में रहते हो. ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस throng into the watershed area of केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. So that means friend, during winter season migratory birds are coming in our country and in these regions or areas like केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर एंड नल सरोवर इन गुजरात. यानी कि जो एरिया ये सब एरियाज है तो वो एरियाज में माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर में आते हैं. Sea turtles come to lay eggs along the sandy coast of Odisha. यानी कि जो सी टर्टल्स है तो वो सी टर्टल्स अपने जो अंडे हैं यानी कि जो एग्स है तो वो रखने के लिए उड़ीसा की जो सैंडी कोस्ट है तो वहाँ पे वो आते हैं. इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द सदर्न रेन फॉरेस्ट. यानी कि जो इंडियन पाइथन है, डिफरेंट टाइप के जो स्नेक्स है और किंग कोबरा जो है कि जो वर्ल्ड में सबसे जहरीला स्नेक माना जाता है तो वो भी रेन फॉरेस्ट जो सदर्न में है तो वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं. वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटेंशन. टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड are on the verge of extinction.
Tigers were found throughout India during last century. We know that, friend, today many wild animals are on the verge of extinction. Till last century, tigers were found throughout our country. Tigers were seen in the forests of Idar, अंबाजी एंड दांता, यानी कि जो टाइगर थे तो वो हमारे गुजरात में ईडर, अंबाजी और दांता में दिखे जा सकते थे। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरियाज, मगर आज जो टाइगर्स थे वो गुजरात के फॉरेस्ट से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि वो अभी देखने को ही नहीं मिलते हैं। चीता इज ऑल्सो एक्सटिंक्टिंग फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट, और चीता जो है तो वो भी इंडियन फॉरेस्ट से आजकल वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वर very easily seen in Indian forests are now hardly seen। तो कई ऐसे भी बर्ड्स की स्पीसीज थी तो वो इंडियन फॉरेस्ट में इजीली हम उसको देख सकते थे, मगर वो भी आज शायद ही देखने को मिलती है। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक with pink throat, cranes and owls are on the verge of extinction. Chileotro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily। यानी कि चिलोथ्रो बर्ड है, वल्चर है, डक विथ पिंक थ्रॉट, क्रेन्स, ऑल्स, तो ये सब जो एक समय पे हमें इंडिया में देखे जा सकते थे मगर वो आज नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो कम्प्लीटली अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, या उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस अभी खतरे में है, डेंजरस कंडीशन में है। देयर इज अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर्स ऑफ द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर्स एंड गंगा रिवर डॉल्फिन, यानी कि जो एलिगेटर्स थे, जो फ्रेश वाटर्स जो रिवर में रहते खास करके, तो वो एलिगेटर्स भी उनका जो सर्वाइवल है वो आज एक डेंजर कंडीशन में है, और गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है तो वो भी एक खतरे में है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट्स ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, यानी कि जो सी टर्टल्स की जो संख्या है, जो नंबर से, तो वो उड़ीसा और गुजरात में भी कॉन्स्टेंटली यानी कि डे बाय डे वो डिक्रीज हो रही है। वाटरफॉल्स मीन्स जल बिलाड़ी, वंस फाउंड फ्रिक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, मही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, यानी कि जो वाटरफॉल्स की जिसको हम जल बिलाड़ी गुजराती में कहते हैं, तो वो एक समय पे नर्मदा, तापी, माही और साबरमती रिवर्स में दिखाई देती थी, मगर वो गुजरात में अभी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है। अ टाइम हैज़ कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली, यानी कि ये अब समय आ गया है कि हमें उनके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, कि जिनके कारण वो अभी बच सके। रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Due to the human interference in grasslands and in watershed area of the forests, the natural habitat of the wild animals is put in danger. So friend, due to humans interference in the grassland as well as in watershed area, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज पुट इन डेंजर, यानी कि ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस होता है ग्रासलैंड्स पे या फिर वाटर सेल एरिया में, उनके कारण जो भी वाइल्ड एनिमल्स है तो वो वाइल्ड एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि नेचुरल अबॉर्ड्स हैं तो वो खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। Its final impact is the reduction in the number of wild animals. That means friend, destruction of forest is the main reason responsible for natural imbalance, यानी कि जो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन होता है तो वो एक मेन रीजन माना जाता है कि नेचुरल में इम्बैलेंस करने के लिए, और उनकी जो फाइनल इम्पैक्ट होती है, उनकी जो फाइनल इफ़ेक्ट होती है तो वो वाइल्ड एनिमल्स की जो नंबर्स है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
Hunting the animals to obtain hair, skin means head, bones, horns और nails is also responsible. यानी कि जो एनिमल्स की हंटिंग होती है उनके हेयर के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए, उनके हॉर्न नेल्स के लिए, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके हेयर के लिए, उनकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, हॉर्न्स के लिए और नेल्स के लिए जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स को वो मार देते हैं। Next point, the over-exploitation of forests made by human for his greedy motives such as roads, multipurpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displace the wild animals. So that means friend, humans to satisfy their greedy motives, they are exploited to the forests, such as to make roads, to make multi-purpose projects for mining minerals, to expand their settlements or cities in these places. And due to these things, wild animals are transferred from one place to another. यानी कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है, यानी कि ह्यूमन की जो ग्रिड से उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो ह्यूमन वहाँ पे रोड्स बनाते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कई बार मिनरल्स की माइनिंग के लिए, तो कई बार जो सिटीज़ वो एस्टेब्लिश करने के लिए वो फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे जाने के कारण वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं तो वो कहीं और यानी कि दूसरे प्लेस पे वो चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग इंक्रोच्ड फॉर ग्रास, फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग। यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड है तो फॉरेस्ट लैंड को ग्रास के लिए, फ्यूल के लिए या कुछ ग्रेजिंग एक्टिविटी के लिए उनको डिस्टर्ब किया जाता है या फिर उनको नुकसान किया जाता है। द फॉरेस्ट फायर इनगल्फ्स मैनी स्पीसीज एंड ड्यू टू दिस थिंग और ड्यू टू फॉरेस्ट फायर मैनी स्पीसीज वर put in danger condition. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. यानी कि जब फॉरेस्ट फायर होती है उस वक्त जो भी यंग वंस जन्म लेने वाले होते हैं या फिर बर्ड्स के जो एग्स वहाँ पे रखे हुए होते हैं तो उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होती है और उसके कारण भी जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स की नंबर से वो कम हो जाती है। क्योंकि उस वक्त जो फॉरेस्ट फायर होता है तो फॉरेस्ट फायर में ये सब जो बर्ड्स है, जो एग्स है, तो उनको कम्प्लीटली जो डैमेज है, नुकसान है वो होता है और कई उनमें से तो मर भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द लॉस ऑफ their नेचुरल हैबिटाट्स many animals without any abode come into conflict with man and sometimes even lose their lives। यानी कि जो नेचुरल हैबिटाट्स है वो नेचुरल हैबिटाट्स गंवाने के बाद यानी कि वो नेचुरल हैबिटाट उनको नहीं मिलता, उनके कारण जो भी एनिमल्स है वो एनिमल्स डायरेक्टली जो मैन है वो मैन के कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और कई बार वो अपनी जो जान है वो जान भी गंवा देते हैं क्योंकि वो अपनी जो नेचुरल हैबिटाट की ढूंढने में, अपने जो फूड है, वाटर है, वो ढूंढने के लिए कई बार ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे जो पर्सन है या फिर जो भी एनिमल्स थे तो वहाँ पे उनकी डेथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हंटिंग टू प्रोक्योर बायोमेडिसिन और थिंग्स विच मेक परफ्यूम ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि कई बार मेडिसिन के लिए या फिर कुछ परफ्यूम बनाने के लिए ऐसे जो एनिमल्स है तो वो एनिमल्स को कई बार मारे जाते हैं, यानी कि उनको हंटिंग किए जाती है और ये इनके कारण हंटिंग होते हैं। तो हंटिंग के कारण ऐसे जो एनिमल्स है, ऐसे जो बर्ड्स है, उनकी जो संख्या है, उनकी जो नंबर्स है वो नंबर्स कम हो जाते हैं। रेड पांडा, रेड पांडा इज फाउंड in the cold forests of eastern Himalayas. His food is bamboo sprouts, eggs, small birds, insects, etc.
So generally, red panda is found in the cold region or cold forests of eastern Himalayas, and the food of red panda is bamboo sprout, eggs, small birds, insects, etc. So these are food of red panda. It is less active during the day. Besides India, it is also found in China, Nepal, Bhutan, Myanmar. So during the day, this animal is less active, and besides India, यानी कि इंडिया के अलावा वो चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार में देखे जाते हैं. Now friend, we will see measures of preservation of wildlife. It is necessary to change our attitude and perception towards the forest. We consider it as a source of unlimited income, which is a mistake. It must be preserved. Only then the natural habitats for wildlife can be saved. So friend, we have to change our attitude and perception towards the forest. We consider forest as a source of unlimited income, which is a mistake. We must preserve it. Then we can protect or we can save the natural habitats of the wildlife. Second point, maintain the balance of number between the herbivores and the carnivores in the forest. For this, steps like maintaining the water sources in the forests and restriction on grazing of domestic animals should be taken. So friend, we should maintain the balance between the herbivorous animals and carnivorous animals in the forests, and we should maintain the water sources in the forest, and we should restrict some grazing activity for domestic animals for the local people. Next point, there should be strict laws to ban hunting. Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest area, and a fine should be imposed. That means friend, we should frame a strict laws to stop hunting activity, and we should implement these laws strictly, and we should arrange there some punishment for illegal mining in the forest areas, and we should also impose some fine on their particular person. Next point, it is necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during their procreative period. So friend, we should arrange some condition they because they cannot disturb while their procreative period, यानी कि जब उनका procreative period चल रहा हो तब उनको डिस्टर्ब न हो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट करना चाहिए या उसकी एक नेसेसरी है. Next point, a study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings, or tourism in the forest, and steps should be taken accordingly. So that means friend, there is a necessary to make a study about effects of fisheries, forest gatherings, or tourism in the forest, and we should take step according to that provision. Next point, programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. So we can arrange programs such a thing. So by this thing the awareness can be spread in the society, यानी कि ऐसे भी प्रोग्राम हम अरेंज कर सकते हैं कि जिनके जरिए सोसाइटी में एक जो अवेयरनेस जो है तो वो अवेयरनेस स्प्रेड हो सके. If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. So, if we see wildlife protection force is working inactively, we should put pressure on this institution, and we should give priority to save and conserve forest resources as well as wild animals.
यानी कि अगर हमें ऐसा लगता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो हमें ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो प्रेशर बना सकते हैं, और प्रेशर बना के उनको जो प्रायोरिटी जो दी गई है जो काम के लिए, तो वो उनके पास हमें करवाना चाहिए, कि जिनके कारण जो फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड एनिमल्स है तो उनको हम बचा सकें। Ganga River dolphin. This Ganga River dolphin, found in river Brahmaputra and Ganga, is a freshwater species. Generally, it lives in the river having deep and calm water flow. So, generally, friend, Ganga River dolphin is living in a deep and calm water flow. It is found in the Ganga River, which flows through one of the densely populated regions of the world. So friend, this dolphin is found in a Ganga River, which flow from densely populated regions of the world. Due to this release of dirty water in the river, sedimentation due to deforestation, fisheries, navigation in the river, industrial waste, etc., danger has been created against its existence. So that means friends, due to the releasing of dirty water in the river and due to deforestation, fisheries, and industrial waste, the existence of this dolphin is now in a danger condition. Apart from Ganga and Brahmaputra rivers, there are few such dolphins left in Chambal river. So friend, except Ganga and Brahmaputra rivers, a few numbers of dolphins are left in Chambal river. It comes to the surface very often to breathe, making "su-su" like sound. So it is also known by other names like sounds, "su-su" or "shoes." So friend, to take a breath, this dolphin comes on surface of the water frequently, and they are making some noise. So it is also known as swans or susu or shoes. It is also found in the rivers of our neighbors Nepal and Bangladesh. So friend, apart from our country or except from our country, this dolphin is found in our neighbor countries like Nepal and in Bangladesh. At present, the existence of Ganga River dolphin is in danger.